रहा है तो साइलेंट कर। इसका उतना आवाज है कि आ जाएगा। फॉर सिटिंग बैक लिखो ना। सेटल रोलिंग है। इंडिया टुडे का सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿੱਚੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। Musically itself is a celebration. Firstly, I should tell this was not my idea to keep it here. I had that rebellious attitude. Rap gives me kind of a resistance feeling. भाई हम अपनी कला के जरिए बहुत कुछ सुधार सकते हैं। फ्रीडम के साथ कोई भी आर्ट उसका बहुत बड़ा कनेक्शन है। It's not the country who decides the course of the music, the artist, so it's their choice. My art is a tool for me. I want you to listen to my story. आर्ट का कभी नेगेटिव साइड नहीं होता। एक शब्द के लिए रिस्पॉन्सिबल हो आप। It's very ironic that when an animal die, you consider it's funny, comedy. But when people die, it's tragedy. നിർത്തുന്നതിൻ്റെ ഇരട്ട stop this double standard. തിരിച്ചു താക്കും ഇതിൻ്റെ വാക്ക്. We'll blow back at some point. This is my word. Wait for it. Hi, I'm Neeraj Madhav. I'm an artist, dancer, an actor. You might know me from The Family Man. I played the character Musa Rahman. Most of my work is in Malayalam. Rest of it you can find out from the internet. And Jay. Ayayo, body body low, daddy daddy body urakanaru billalo. Being a rapper, being the latest of it. It's not a very conscious decision. It all organically developed. I don't consider myself a musician. I was primarily into dancing. That was my connect with hip hop. Those days I wasn't really aware of the lyricism or anything. It's just the beat and the vibe of it. Later on, when I started, listening to the lyrics, is when I was like really moved by the power of this genre of music. When I'm stepping into something like this, I wanted to come with something with a substance. Hip hop is about freedom of expression. You can do any kind of subculture, subgenres. You can bring all into it. During lockdown, when we all were stuck, you don't have that urge to, I need to get this done, I need to get that done, next movie, next screenplay. Everything's stuck, everybody's stuck. So the rat race is not there anymore. So what was actually going around in the world, all the negativity, it started getting into my head. I realized, let's relax, let's look inward. What do you want to do? What do you love to do? Because you need some sort of a relaxation, but I want to be creative as well. So I started sitting down and grooving to certain beats, few beats, and I started writing simply. So then I thought, okay, let's make an EP. Let's properly make some music because it's generally naturally coming to me. The first thing I made was a live recording on my phone called Oru Katha Parayam. Let me tell a story. ഒരു പാട്ടിന് ലിറിക്സ് എഴുതി ഒരു റാപ്പ് സോങ്. So this is my first original song. Tell me what you think about it. ഒരു കഥ പറയാം ഇനി തുടങ്ങാം ഓർമ്മയിൽ ചില താളുകൾ മറിക്കാം. It was just a random beat from YouTube and it's not even a proper track. It's like a mixtape or a verse. കഥ കേൾക്ക് ഈ കഥ കേൾക്ക് നീ കഥ കേൾക്ക് ഈ കഥ കേൾക്ക്. I just simply posted it on my Instagram and people were like, you have a wordplay there, your bars are good. So I'm like, okay. So then my immediate thought was to go to RZ because RZ was the guy who inspired me to write in Malayalam. So big shout out to him. So I called him up and I told him, I have this couple of verses, I'm sending it to you, tell me what you think about it. He's like, dude, this is cool, I'm going to make music for this. This is when I was initially identifying that I can properly write lyrics, and then I wanted to write something with substance. That's when I've been getting all these videos of random videos of wild animals
coming into the city where people have abandoned the city and the roads and everything. So I see this peacock flying through the swimming pool. I see this elephant Padayappa, which is an actual character, which I adapted to the song. This guy comes to the Munnar town. He doesn't attack any people, but he kicks open the closed stores and he takes bananas and he takes what he wants, and he's like striding through the Munnar town, and it was like, damn, this is like Great time during lockdown. yeah, he was just like the king of the city. ഞാൻ വീണ്ടും പട്ടയപ്പ back on the mic എനിക്ക് തട്ടി തപ്പാൻ സമയമായി let's wind up the lines. Thinking about that perspective of what would these animals have to say, about the human atrocities and what is going around. I was always an animal lover, and always a nature lover. So I've been wanting to talk about it from my heart. Basically, it all started with a hook which goes like. Think it is. So we've been just forgetting everything and doing whatever we wanted. So sit back and understand, respect the power of the nature and let it be. So, and it's time for them to speak, somebody who represent the nature. A really good idea. I do try to relate with the personal agony of that particular animal, or what kind of torture they would have gone through. When a monkey speaks, like it's like him speaking, into your face. Yeah. എന്റെ പേര് സുലൈമാൻ ഈ ചുരത്തിലെ ഹനുമാൻ The road kills happen all the time. കുടിക്കാൻ ഇത്തിരി വെള്ളത്തിനായി അവരോട് ഞാൻ നിരന്നു എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചിട്ട് അവർ സെൽഫി എടുത്ത് പിടി. Finally somebody came, stopped the vehicle and came by, and I thought they're going to give me some water, but they wanted to click a selfie with the monkey and they left. So that's what yeah, probably, definitely. What I want you to do, Neeraj, is just pick up your phone and let's go through some of the comments that you've gotten on YouTube on that song. Right. Right? So this is the actual footage of Padayappa.
The ones we incorporated. Writing is next level. The lyrics makes much more sense now. Enduru migacha theme aanidu. What a great theme. Oh, these are all new comments. Thanks for asking me to check this. So many new comments. Damn, how did this dude see into the future? Elephants, wild boars, the explosive traps. Way too accurate to be a coincidence. This song deserves more attention than Panibali. Yeah, I admit it. So too. Yeah. True, it is true, but the world is not fair. You Yeah. should give that a like. Yep, right away giving that a like. Sort of a bias here, like it's the sort of a whataboutery here. Like you talk about what your personal experience, what actually matters to you. Don't put in politics into your rap song because people would value you just because by doing that you sound cool or more intelligent or something of sort. The animal perspective that I put into my songs are also political in a way, but it's just that people don't consider it that political because it's something that doesn't affect them. But the kind of effort we put in, you don't get that level of love at that point. So you get tired at what point where why am I doing this? But then for the passion, out of the passion for it, I keep doing it and consistently. But at some point you start getting rewarded. मुझे ये तो कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि ये खेला होबे इस बार बंगाल चुनाव को डोमिनेट करेगा, क्योंकि एक क्रिएटर को पता होता है अपना क्रिएशन कितना दूर जाएगा। खेला होबे को आम जनता ने इतना अपना कर लिया कि जहां जहां पर खेला होबे बोला जा रहा था, सब सोच रहा था भाई सारे जगह क्या टीएमसी का बन गया है। The Trinamool Congress has coined a slogan, which means game is on, that's gone completely viral in Bengal. It was created by 25-year-old civil engineer and Trinamool supporter Debangshu Bhattacharya. टीएमसी का एक कार्यकर्ता हूँ, टीएमसी का एक वर्कर हूँ और ममता बनर्जी मेरा आइडल है। तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई किया था, तो हमने देखा था कि हम 2-3 लोग ही सिर्फ दीदी का सपोर्टर थे। तो एक ही लड़की लोग था जो कभी बीजेपी का सपोर्ट, कभी लेफ्ट का सपोर्ट, लेकिन उनका मोटो यही था कि दीदी के अगेंस्ट में बोलना है। क्योंकि दीदी का जब कोई बुरा बोलता था तो मुझे पसंद नहीं आता था। 2016 में नोटबंदी हुआ था 8 नवंबर को, आप सबको पता होगा। और तभी हमारे यहाँ पर एक सिम कार्ड कंपनी फ्री में नेट भी दे रहा था, तो वही यूज़ करके मैंने नोटबंदी के अगेंस्ट में वीडियो डाला, तो वायरल हो गया। उसके बाद हिंदी में भी एक किया, वो भी वायरल हुआ। तो हमने देखा ये जो मीडिया में लोगों को पसंद आ रहा है। पार्टी के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन लोग देखकर पहचान लेते थे कि ये तो टीएमसी का सपोर्टर है। तो उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव आया और एज ए सपोर्टर ही मैंने एक स्लोगन बनाया, वो भी ममता दी आरेक बार, वो भी बहुत पॉपुलर है बंगाल में। अरे राज्य दीदी रे राज पिपरे रे डिमोतित आज माओवादी रा छाड़ खाड़ ममता दी आरेक बार, ममता दी आरेक बार, ममता दी आरेक बार। देखा गया बंगाल के लोकसभा के चुनाव में टीएमसी को करीब 22 सीट मिला और बीजेपी का भी गेन किया है, 2 से 18 सीट पर जा चुका था बीजेपी। उसके बाद हमारा पार्टी का ऑफिशियली मीडिया सेल तैयार हुआ, जो पार्टी में पहले नहीं था। तभी मुझे पता चला कि मुझे ऑफिशियली पार्टी का स्पोक्सपर्सन बनाया गया है। तभी किसी ने मुझको सजेस्ट किया था भाई एक फेसबुक का पेज ओपन कर ले। 2020 का अप्रैल में, यानी जब कोरोना का लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, तभी मैंने पेज को स्टार्ट किया चलाना। मैंने देखा यूथ जो है, जो पॉलिटिकल डिबेट्स नहीं देखता था, तो मेरा वो फेसबुक पेज में डालने की वजह से वो यूथ में भी बहुत पॉलिटिकल डिबेट्स पॉपुलर होने लगा। बंगाल का इलेक्शन सामने आया और तभी आप लोगों को याद होगा ये शुभेंदु अधिकारी, राजीव बनर्जी, सारे लोग पार्टी छोड़कर जा रहे थे। हमारे टीएमसी का वर्कर लोगों में थोड़ा मोरल वीक हो रहा था उनका, क्या किया जाए। सब लोग बोल रहे थे देवांशु दा दीदी क्या जीत पाएंगे, बहुत खराब लग रहा है उनको देखकर। मैंने बोला भैया तू सोचता क्यों है, ममता बनर्जी को पहचानता है ना, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है उसे बाजीगर कहते हैं, हमने सुना था ना। तो ममता बनर्जी बाजीगर है, चिंता मत कर। तो तब खेला होबे या फॉर्मेशन हो, खेला होबे, हाँ
বুড়ি মায়ের স্বাস্থ্য সাথী ফুলিয়ে বলে বুকের ছাতি অপারেশন ফ্রিতেই হবে খেলা 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 হবে খেলা হবে তো খেলা হবে খেলা হবে मुझे एक स्लोगन करना था लेकिन क्या करेंगे उसका कोई आइडिया ही नहीं आ रहा है। और जो लिखते हैं ना अगर आप उनके पास जाएंगे तो ये मूड का मैटर होता है। 5 जनवरी को ये बात हुआ, 6 जनवरी को 2-3 प्रोग्राम था, वो सॉल्व करके हम कोच बिहार के कॉलेज के सामने चला गए। वहाँ पर सारे लोग थे, तब मैं जाकर देखा वहाँ पर 20-30 लोग तो आ गए थे, 40-50 लोग, लेकिन सब लोग बोल रहे थे दादा कैमरा सब सेटअप रेडी है, आप स्लोगन लेकर चलाओ। लेकिन मुझे पता चला कि भाई मेरे पास तो स्लोगन लिखा ही नहीं है। तो वो लोग बोल रहे थे भैया कब शुरू करोगे, तो मैंने 20 मिनट मांगा उन लोगों से। तो घास के ऊपर बैठा, मैंने बोला कोई भाई इधर मत भेजो किसी को, अभी फोटो वोटो खींचने के लिए बाद में होगा सब। तो उधर ही बैठकर मैंने लिखा और तभी ये खेला होबे क्यों माथे में आया, क्यों हमने सोचा कि ये खेला होबे ही करना है, उसको लेकर ही उसके इर्द गिर्द ही लिरिक्स लिखना है। ममता बनर्जी ने एक बात बताया था कि अगर आप खेलना चाहते हो तो हम खेलेंगे। तो उन लोगों का जो 11 लोगों का टीम है, हमने देखा कि उनके खिलाफ हमारे तरफ से एक ही औरत मैदान पर है, वो है ममता बनर्जी। उनका पैर में बूट है, हमारे जो प्लेयर है उनके पैर में हवाई चप्पल है। तो ये खेल ही हो रहा है, बहुत बड़ा खेल हो रहा है। तुमने हवा तैयार कर दिया कि बीजेपी आ रहा है, तुम सब कुछ कर लिए जो तुम्हें करना चाहिए था। आओ अभी तो आप ये नहीं बोलोगे कि आपको मौका नहीं मिला था, चलो एक खेल हो जाए। ये ब्रिंग इट ऑन वाला मोमेंट एब्सोल्युटली। कहीं आप मानो ना मानो खेला होबे गाना या फिर खेला होबे कैच फ्रेज, ये एक टर्निंग पॉइंट मानोगे आप 21 के चुनाव में तृणमूल के लिए? खेला होबे को लेकर मैंने ग्राउंड के कैंपेन में जो देखा है, उससे जो हुआ, मुझे पता नहीं आम जनता का वोट कितना आया इससे, वो तो हमारा पार्टी बोल सकता है और जो सर्वे फर्वे अगर अगले दिन में होगा तो वो बोल सकता है। लेकिन हाँ ये जरूर देखा, जो मोरल वीक हो चुका था टीएमसी वर्कर का, वो एक चंगा हुआ था। मुझे 2-3 लोगों ने बताया, बहुत इंटरेस्टिंग, ये कैसे जय श्री राम को भी रोक दिया। मान लीजिए बीजेपी कहीं पर जय श्री राम बोल रहा है, एक टीएमसी का वर्कर वहां पर प्रोटेस्ट किया, भाई जय श्री राम क्यों बोल रहे हो? तो हाला बीजेपी का लोग बोलेगा क्यों भाई, ये तो भगवान का नाम है, तुम रोकोगे क्यों? तो ठीक बात है। जब खेला हो गया आया तो बीजेपी का एक लोग जब जय श्री राम बोलते थे और हमारे एक वर्कर जब वहां पर जाकर ही एक चाय का कप लिया और चाय पीते पीते सबके सामने बोला खेला होगा, खेला होबे, तो उनमें जो चिढ़ दिखाई देता था ना, यही शायद कहीं पर क्लिक कर गया। वही खेला होबे बज रहा था जहां पर लिखा हुआ है तृणमूलेर भांगिए नेता, यानी टीएमसी का नेता तोड़कर फायदा नहीं, उनमें टीएमसी है, उनमें दीदी फिर से जीतेगा है, और वही बज रहा है एक पार्टी में जहां पर कोई पॉलिटिक्स का लोग नहीं है। इसका मतलब ना चाहते हुए भी लोग ये बोल रहे थे कि भाई टीएमसी का नेता तोड़कर कोई फायदा नहीं है, जीतेगा तो दीदी ही। मुझे तो ये नहीं लगता कि कोई भी चीज किसी चीज को 180 डिग्री चेंज कर सकता है, लेकिन एक म्यूजिक जो कर सकता है मोरल बूस्ट कर सकता है। 2015 में आप मुझे पता है जब केजरीवाल जी को 7 सीट मिला था, उस बार 5 साल केजरीवाल का नारा हिट हुआ था। उसके बाद इस बार लगे रहो केजरीवाल। इस तरह से हर स्टेट में, महाराष्ट्र इलेक्शन में भी शिवसेना का सॉन्ग आया था। जनता कौन से क्रिएशन को एक्सेप्ट करेगा ये कोई फिक्स नहीं कर दे सकता, क्योंकि बंगाल में बीजेपी का भी तो गाना था और हमारा भी गाना था बांग्ला निजेर में के चाय, यानी बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। उसके बाद खेला होबे भी एक स्लोगन था। तो जनता ने खेला होबे स्लोगन और बंगाल अपनी बेटी को चाहता है ये स्लोगन को एक्सेप्ट किया, बीजेपी के स्लोगन को, लेफ्ट के स्लोगन को नकार दिया। क्रिएशन तो वो भी था, आर्ट तो वो भी था, लेकिन वो जनता कौन किसी को एक्सेप्ट करेगा उसका कोई पैमाना नहीं है। जनता को अभी खेला होबे का माने भी पता है, ये बंगाली वर्ड है तो ठीक है, लेकिन पूरा देश को पता चल गया खेला होबे का मतलब क्या है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको यूज करना चाहे खेला होबे को, ये फ्रेम को यूज करना, ये कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं? नहीं, वो अपने तरीके से यूज करें। तृणमूल या फिर आपकी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी नहीं है ये? नहीं, ऐसा कुछ प्रॉपर्टी नहीं है। देखिए हम तो वंदे मातरम किसका प्रॉपर्टी है, भारत माता की जय किसका प्रॉपर्टी, हम सब भारत को माता मानते हैं, हम सब वंदे मातरम बोलते हैं। देखिए आर्ट का कभी नेगेटिव साइड नहीं होता। जय हिंद नेताजी ने ब्रिटिश के खिलाफ यूज किया था, है ना, तो जय हिंद अभी भी हम सब लोग बोलते हैं। तो खेला होबे अगर एक ऐसा ट्यून बन जाए जो बीजेपी के खिलाफ वन एंड ओनली ट्यून है कि बीजेपी के देखकर ही कोई बोलेगा खेला होबे, तो ये तो अच्छा है ना, क्योंकि टीएमसी तो सिर्फ अपने स्टेट के लिए नहीं सोचता, ममता बनर्जी पूरे देश के लिए सोचते हैं। लेकिन 2024 में पूरा देश का जनरल इलेक्शन के लिए एक स्लोगन तो हम लाएंगे, और मुझे ये पता है कि पूरा देश में भी ये डोमिनेट करेगा जिस तरह से बंगाल में किया था। एक भाषा में करोगे या फिर एवरी स्टेट, मतलब जहाँ पे जो भाषा चलता है उस पे भी ट्रांसलेशन? देखिए पहली तो बात है, मैं तो एक यूनिफॉर्म हिंदी में करूँगा,
बंगाल को जिस तरह से खेला हॉबे ने डोमिनेट किया है, वो देश के लिए जो आएगा वो पूरा देश में डोमिनेट करेगा। दिबांशु, बहुत सारे सवालों का आपने जवाब दिया, लेकिन ये हो नहीं सकता कि आपका इंटरव्यू हो रहा है और खेला हॉबे को लेकर इंटरव्यू हो रहा है और आपसे ना कहे कि वो गाना फिर से थोड़ा गुनगुनाए हमारे दर्शकों के लिए। हम ये ड्रम को ले लेते हैं थोड़ा, क्योंकि थोड़ा बीट भी हो जाएगा। जब स्लोगन था ना तो सामने तो लोग था, वो लोग क्लैपिंग करते थे। टीवी का साउंड बढ़ा दीजिए। বাইরে থেকে বর্গি আসে নিয়ম করে প্রতি মাসে আমিও আছি তুমিও রবে বন্ধু এবার খেলা হবে তৃণমূলের ভাঙিয়ে নেতা নয়কো সহজ ভোটে জেতা दीदी ছবি সরবে যাবে বন্ধু সেদিন খেলা হবে। दीदी ये खेला होबे का दिन भी बंगाल में अभी 16 अगस्त खेला होबे दिन मनाया जाएगा। तो ये तो एक क्रिएटर के लिए सबसे बड़ा जो क्या है, सबसे बड़ा गिफ्ट है कि उस स्लोगन को लेकर एक दिन बन रहा है अलग तरीके से। बंगाल के कैलेंडर के लिए हमेशा हमेशा के लिए वो चला आएगा। एक बात है, एक स्लोगन, एक म्यूज़िक, एक सत्ता को, एक सत्ता में कौन बैठेगा ये भी फिक्स करने का जो लड़ाई है, उसमें सबसे बड़ा मंत्र भी बन सकता है। सियाने लोग बोलते हैं कि वो कला किसी काम की नहीं है जो आपके काम की नहीं है, जो मेरे समाज के काम के लिए है, जो मेरे लोगों के काम की नहीं है। ये खेती करते हैं तो इनकी लाइफ ही ये खेती है। तो ऐसे ही म्यूज़िक में ही हूँ, जो मैं पंजाब से हूँ, तो पंजाब के लिए मुझे क्या गाना चाहिए। सत श्री अकाल। पहला सब तो मेरा नाम कंवर गरेवाल है, पंजाब दे विच मेरा डिस्ट्रिक्ट है जिला बठिंडा। म्यूज़िक तो लाइफ है मेरी। एक घड़ा होता है, उसकी बनतर होती है, वो मिट्टी से बनता है। तो मैं मेरे ख्याल से बना ही म्यूज़िक से हूँ। मोस्ट ऑफ तो वो होंगे लोग जिन्हों का बचपन तो ये रुझान होंदा है कि बचपन तो इस पासे ही जाना मैं। सो मैं भी उन्होंने चो एक सी। फादर साहब ने मैंने कहा सी, कहते कि डोंट वरी यार, तू जे सीखना गाना चाहना है ना जे तो गा, और पर सीख के गा, पहले ट्रेनिंग लै प्रॉपर। मसला ऐसा था भाई कि मेरी लाइफ का ना एक बहुत बड़ा चेंज ओवर है। 2010 19 दिसंबर एक दिन था कि जब मेरा फ्रेंड है, एक दिन वो मेरे से वैसी बात कर रहा था कि मैं ना तेरे को एक फ़कीर के पास लेके जाना चाहता हूँ। बेबे जी बोला उसने। वो भी जो एक्चुअल में गुरु नानक ने कहा है, वो फ़िलासफ़ी को ही फॉलो करते थे, जो एक की बात करता है, जो यूनियन की बात करता है। सो जैसी वो बोलते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। सो संगत से हिसाब से धीरे धीरे फिर वैल्यू मालूम पड़ी कि म्यूज़िक की वैल्यू क्या है। वो उल्टा सीधा गाना जो आजकल कई मेरे भाई बहन गा भी रहे हैं, कि वैसा गाने की मेरे को इजाज़त नहीं है। एक शब्द के लिए रिस्पॉन्सिबल हो आप। जो भी मेरे समाज में, मेरी स्टेट में, मेरी कंट्री में अच्छा हो रहा है, मैं अप्रिशिएट करूँगा अपने गीतों के ज़रिए। और जो अच्छा नहीं हो रहा है उसकी खिलाफत भी करना हमारा काम है। तो ये सूफी सिंगर एकदम से किसी कॉज के लिए, किसी रीज़न के लिए, स्पेसिफिकली बदलाव लाने के लिए है, या किसी फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए है, उस तरफ कैसे मुड़े? देखिए, हम इन खेतों से ही निकले हैं भाई। हमको पता है कि कैसे माँ बाप ने बचपन में जैसे भी तंग हो के किसी भी मुश्किल में वहाँ से गुज़रते गुज़रते हमको पढ़ाया लिखाया। मुझे सारा पंजाब मेरा एक फैमिली लगता है। तो इन दिनों में जब ये आए थे, ये बिल आए थे, तो तब लगता था कि बहुत ज़रूरी है ये। मेरे ख्याल से म्यूज़िक इंडस्ट्री की वजह से ही एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से ये तो नहीं है कि इंडस्ट्री की वजह से ही है, लेकिन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस बार। क्योंकि हम डिज़र्व करते हैं, हम वो लोग हैं भारत के, हम उस संस्कृति से हैं, हम उस मिट्टी से हैं, हम उस हिस्ट्री से हैं, उस हिस्ट्री से ताल्लुक़ात रखते हैं हम। कि जब हम बात करते हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर की, जिन्होंने हमें ये ज़मीनें लेके दी हैं, हम बाबा दीप सिंह के बच्चे हैं, हम गुरु नानक के बच्चे हैं। सो हम डिज़र्व करते हैं कि हम वो गा सकते हैं, कैपेबल हैं हम। मैं अकेला तो नहीं कुछ भी कर सकता। अगर मैं अकेला यहाँ पंजाब में किसी चौक में खड़ा होकर बोलूँ कि भाई आओ दिल्ली चलना है, कितने लोग आ जाएंगे भाई? तो वो फिर एक आग की तरह फैली वो सारे वर्ल्ड में। आज वर्ल्ड को पता है जी करता, क्योंकि जब पंजाब से संघर्ष चल रहा सी तो उस वे कल्पना की सी एक कि तैनू दिल्ली इकट्ठ परेशान करूँगा, पर फसलों के फैसले किसान करूँगा। आज खिंच के मारे तारी खिंच के। अगर हम आर्ट की तरफ देखें तो जो उसके लिरिक्स हैं वो कनेक्ट कर रहे हैं लोगों। या बिल्कुल। ऐसे ही एक लिरिक जो आपका था कि
ये भी एक ऐसा है जो नारा ही बन गया है प्रोटेस्ट का। ये कैसे दिमाग में आया? मेरे ख्याल से मेरा इस मोर्चे में सबसे पहला दिन वहीं पे था। हाँ, 25 सितंबर को बहुत से सिंगर्स वहाँ पे आए थे मेरे भाई, तो फिल्म इंडस्ट्री से बहुत से लोग आए थे। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में मेरे को फ़ोन आ रहा है उसका, भाई मैंने गीत लिखा है यार, क्योंकि उससे पहले तो कोई गीत नहीं किया था प्रोटेस्ट के लिए। मैंने उसको पूछा क्या लिख रहा है, उसने पहली लाइन यही बोली कि फसलों के फैसले किसान करेगा। मेरे को बड़ा सुन के ऐसा लगा कि यार ये तो स्लोगन है, ये बहुत बड़ी बात है, ये आखिरी बात है। जब भी किसी धरने में पहुंचते तो मेरा गीत ही होता था। पहले दिन से जब मैं पहली लाइन गा दी कि फसलों के फैसले, तो आवाज़ आती थी लोगों में से। अच्छा, आपका एक और सॉन्ग जो आई थिंक सबसे टॉप पे हमेशा रहा, पेचा। किसी की स्पीच वहाँ से हटा दी, किसी की फुटेज चली गई, या कोई कहीं पे इकट्ठे हो रहे हैं उनको रोका जा रहा है। तो लगता है कि ये जीत की ओर जा रहे हैं हम। आगे से लोग बहुत अग्रेसिव हुए पड़े थे, कैसे हटा दिया, हम ये करेंगे, वो नहीं, ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। मेरे को आवाज़ दी है भगवान ने, लफ्ज़ दे रखे हैं, वरी आई ने लिखा था वो गीत, मैं वरी को बोलता हूँ एक गीत और लिख देगा, तो उसने नेक्स्ट डे एक गीत लिख के और भेज दिया मेरे को, तो वो हमने गा दिया। मुझे लगता है कि हमारा फोकस वहीं पे रहना चाहिए कि ये बिल हमें मंजूर नहीं है, इसको प्लीज़ पीएम सर को भी ये रिक्वेस्ट है कि वापस लीजिए, और उनकी सारी कैबिनेट को ये है कि आप में बैठ के ये सब विचार विमर्श कीजिए आप, क्योंकि 9 महीने हो गए हैं। अब जो चीज़ मेरे अंदर बस गई ना, उसको बाहर से आप किसी कागज़ को फाड़ दोगे, किसी फ़ोन में से डिलीट कर दोगे, किसी लैपटॉप में से डिलीट कर दोगे, यहाँ से डिलीट कर दोगे, कोई फ्लैक्स लगी है उसको फाड़ दोगे। मेरे ख्याल से उसके बाद ये वो फ़ायदा नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो यहाँ पे बस गई है। ऐसा दौर आ गया ना कि लोग हमको इतना लाइटली लेने लगे। लोगों ने कुछ सिंगरों को छोड़ के ऐसा देख लिया कि भाई इनके पास समाज के लिए कुछ नहीं है, तो वहाँ पे फिर आके कहते हैं कि यार कि इसको छोड़ के आप पॉलिटिक्स में चले जाओ। लेकिन चाहिए था हमको ये कि भाई हम अपनी कला के ज़रिए बहुत कुछ सुधार सकते हैं। प्रोटेस्ट में क्या हुआ, अगर सारे सिंगर भाई आए, सभी ने पार्टिसिपेट किया, तो देखिए कैसी वेव बनी। यूथ सुनता है उनको,
तो कैसे वो घरों से निकल के, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि यूथ का हमारा इतने बड़े लेवल पे पार्टिसिपेशन हुआ। किसान ही नहीं, किसान मजदूर तो चलो एक स्लोगन बन गया, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद हम बोलते हैं। इसके अलावा भी बहुत से और लोग के जड़े जो मायने सी वो समझ आने लगे हैं। जब आवाम खुलेआम बोलता है, लेकिन उसमें वही बात है कि वो सब रहना चाहिए। The social responsibility is what I saw there. That was the main lesson for me. So I think that continues through my rap. My art is always my tool. I see it as one last weapon that I have to, I have for my next generations or towards a better society. நாம் தமிழர்களா, இந்தியர்களா, மலையாளிகளாங்கிறது முக்கியம் கிடையாது. நாம் மனிதர்கள், வெறும் மனிதர்கள். You want to cut it? We can cut it. Okay. No issues. Okay. Relax, comfortable, enjoy it. Thank you. Okay. I am Arivu. Like, I'm an artist. My art is for everyone who needs to be voiced out. Like every voice that needs to be heard. I'm here as a byproduct of like generations of oppression and struggle and the history. We call it collectively as history, but history has so many sides to it. So I am from the bottom side of this history. So I identify myself as a human who creates art about being human and being equal. நாட்டுக்குள்ள நீதி கேட்டு அலைகிறோம், பாதி வாங்கி தருவதற்குள் மூச்சு நின்று சாகிறோம். இதனை புரிந்து கொண்டால் நீயும் இணைந்து கொள்வாய். மனித மாண்பு ஒன்றே இந்த பூமியின் தேவை. கடந்து சென்றால் நீயும் ஒதுங்கி கொண்டால் மீட்க யாரும் இல்லை, நீயே கொண்டு வா தீர்வை. I grew up in a place where I was surrounded with working class people. The people around me had kind of a music that represents their struggle. There was no romanticization. So everything was real around me. So those kind of songs and art form, especially நாட்டுப்புற பாடல்கள், ஒப்பாரி பாடல்கள். These are the songs which I grew up listening to. So it had a great influence on me. So even during my school days, like 4th or 5th standard itself, I felt like I'm an artist. We grew up with artists who were like the local artists who performed art forms which were oral traditions, which carried the life and struggle of our people. Yeah. ஐயோ இது கொடுமை, இனவாதம் இங்கொரு சிறுமை, பெருமைக்கென வாழ்வது மடமை, உன் தலையென தூக்கி தூரத்தில் வைத்தவிடா, இங்கு எல்லோரும் சமமா, இளம் எல்லாமே பொதுவா, நம் பண்பாடும் இதுவா. என்ன நபுனக்கு ஆன்டி இண்டியன், உன் போல் ஒரு மனிதன் தானே நான் இங்கே. I get easily emotional during my childhood, even now, but back then it was like for very small things. I started writing poems. Like I started venting out my emotions by poems. So I used to write. I just create a small private, place using the mat, like the floor mat which you used to sleep. I just make it stand tall, make it as around, sit inside it. I just put bed sheets, sit inside it, take a pen and paper. I write all my feelings. I sometimes cry inside that.
I observed people, I heard the stories of my roots, and this is all I had, but I didn't particularly wanted to get into rap, or I didn't particularly wanted to get into folk or something like that. I just want to express myself, express the content in every way. I see content as my journal. Yeah. How I connect with rap is, it doesn't need any instrument, it doesn't need any, anybody basically. Rap just need words, basically pen and paper, and then you can just convey a thing. And also rap gives me a kind of a resistance feeling. நான் ஸ்னோலின் பேசுறேன் உன் காதில் விழுதா உன் மேல கோவம் இல்ல, நான் ஒன்னும் கோழை இல்ல, உன்னை போய் திருப்பி கொள்ள நீ எதிரி இல்ல, எதுக்கு அழற அப்பா பொண்ண பிறந்த தப்பா. When I do rap, I feel like venting out my pain to you, and I am able to convey my story and in a beat basically. If we watch the evolution of hip hop, the rap came out from African American people, where they never got access to use musical instruments or learn musical instruments, so they used their mouth as instruments. So we can relate it with our own Opari in Tamil Nadu. It was during 2020 January. The CAA NRC protests were widespread in India. As an artist, I felt like it's my responsibility also to take part in that and stand with the people. So I wanted to create a song for that. The name of the song was Sanda Sevo. So it's like fight for our rights. Since from my childhood, I had attended so many protests with my family. Basically, we go to literature meetings. We go to protests. That was our like part of our life basically, because we need to voice out louder to get our needs. So in that way, I felt it's my responsibility also to stand there. So there was one line which is kind of poetic, but I like this line. All of us are immigrants to this world. Like ellarum bhoomikku vanderi dhaan, இந்த யுத்தத்தை நடத்துறான் வியாபாரி தான். Everything had become business, and it's a corporate world where our feelings are not our feelings. Our feelings are decided by someone each day morning. So we need not have to fight with our identity. We just need to accept you as you and accept me as me. There is one thing common I've noticed in your song in this phrase, Jai Bhim. தலைமுறை ஒன்றாகும் ஜெய் பீம், விடுதலை உண்டாகும் ஜெய் பீம், சமநிலை கொண்டாடும் ஜெய் பீம். Do you also follow Ambedkar's value or this idea of what India should be? I see him as a visionary who fought for the right of every Indian. I see him as a role model. I see him as my star to follow. Our inequality has a longer history than our independence. The problem lies in the bed of the society, where something is a problem for you but not a problem for me. Something is a need for me, it's not a need for you. So collectively we are not independent. Somebody has to sacrifice even today for someone to be comfortable. Somebody has to work as a manual scavenger for someone to breathe free. தொடமறுத்தது மனு வேதம், அதன் தொடையும் நடுங்கியது மத மாற்றம், பெரும் பகுத்தறிவு பகலவனாம் புத்தர், பகுத்த வழி நடப்பவர் அம்பேத்கர், அடிமை நிலை உரை தெரியும் டாக்டர், அரசியலில் அடித்தளமாம் மீட்பர், விடுதலை இலக்கணம் அவரது பணி, சமத்துவம் அடைந்திட தொடரலும் இனி. Do you believe caste difference is something in India is still fighting? You seem to call caste issue as a disease in one of your songs. Caste is the endless pandemic kind of a feeling it gives to me. The only cure is to discuss about it. So I want to create discussions through my songs. The society is designed with caste. We have a house or we don't have a house. We are landowners or we are landless laborers. Everything is designed with caste here.
So in that way, without addressing the root issue, like we can't simply say all Indians are my brothers and sisters. Caste gives us benefit or caste rejects us. I felt like I should discuss about it through my song so that this generation will understand it in a way more, in more clear way, so that unity will be easily possible. The caste discrimination is continuing in modern way. There is modern untouchability today. People don't say that I don't touch you. People just ignores you. To annihilate caste, we have to definitely understand the society from bottom to top approach is what I want. I would like to perform Enjoy Me song for y'all. This is a song that celebrates the struggle and pays homage to the people of this land. Okay? Yes. ಅಲ್ಲಿ ಮಲರ್ ಕೊಡಿ ಅಂಗದಮೆ ಒಟ್ಟಾರ ಸಂದನಮೆ ಮುಲ್ಲೈ ಮಲರ್ ಕೊಡಿ ಮುತ್ತಾರಮೆ ಎಂಗೂರು ಕುತ್ತಾಲಮೆ ఎంజామి వాంగో ఉన్నాగి అమ్మా ఏ అంబారి ఇందా ముమ్మారి. Is rap freedom to you? 100% rap is freedom to me. Absolutely. देखिए कोई भी आर्ट ये फ्रीडम का एक पैमाना है. Doing music means freedom. देखिए म्यूज़िक और फ्रीडम फ्रेंड है दोनों. Venting out my pain, washing out for people. देश में भी फ्रीडम के लिए फाइट हुआ था, तो उसमें भी म्यूजिक का या फिर नारा का, गाना का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था. जो एक फ्रीडम है ना, जो हम बोलते हैं कि लोकतंत्र है यहाँ पे, कि हमको हमारी बात कहने का हक है, उसमें तहजीब मिस नहीं होनी चाहिए. You have to be a little brave to talk for a cause. It's not easy. My art is always my tool. I see it as one last weapon that I have for my next generations or towards a better society. There are so many voices out there to speak for themselves. I think I want to speak for the voiceless, the nature. और एक देश तभी पूरे तरीके से उसको आप बोल सकते हो कि एक फ्री स्टेट है या फिर एक फ्री नेशन है, जब वहाँ पर सब सारे तरीके का आर्ट को सराहा जाता है. This journey needs to be enjoyed as an artist, as a human. तो दुआ है मेरी सबके लिए कि साल में ज़्यादा नहीं तो कोई 3-4 गीत इस घर के भी ज़रूर गाएं वो हमारे भाई. पॉसिबल तो है, लेकिन इसके लिए यहाँ पे काफ़ी लड़ाई करनी पड़ेगी.